हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। और ये वाली क्लास हमारी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास इम्पोर्टेंट तो है, साथ में साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आफ्टर लॉन्ग, अभी शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छी वाली क्लास होने वाली है। तो अपने स्नैक्स या जो कुछ लेके बैठना है लेके बैठो, पानी वगैरह। बीच में आई वोंट बी गिविंग टाइम, और मे बी छोटा मोटा ब्रेक वी कैन गिव, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर भी अभी हम लाइव हैं। कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे रिसर्च के, जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे। कुछ टॉपिक्स रिसर्च के सारे टॉपिक्स हमारे रिसर्च के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, A to Z सारे। कुछ टॉपिक्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कल हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, किस किस ने देख लिया वो। उसके 3 पार्ट्स हैं, तो हम वो तीनों पार्ट्स बहुत जल्दी यूट्यूब पे डालेंगे। हेलो 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 हेलो। ओके, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि लोग एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी दोनों जगह कनेक्ट कर लें, सो दैट वी स्टार्ट आवर क्लास। विल टेक अराउंड लाइक कुछ 5-7 मिनट, एंड देन वी विल स्टार्ट। अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख दो यूट्यूब पे भी और इधर भी। इफ आई एम ऑडिबल, इफ आई एम विजिबल, यस, सो वी आर लाइव दोनों जगह पर। लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस, अब हम दोनों जगह लाइव है। वीडियो ऑडियो सब कुछ एकदम क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग। हमने अपनी 10th यूनिट यानी कि कम्युनिकेशन रिसर्च के बारे में बात करेंगे। एंड हियर वी स्टार्ट। हम बहुत सारे टॉपिक्स अपने कवर कर चुके हैं फॉर रिसर्च, ठीक है। एंड देन बेसिक बात हम जहाँ से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में हमारे पेपर में क्या क्या आता है। तो हम ज़्यादातर आज सिर्फ टॉपिक्स पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट विल डू क्वेश्चंस अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। और द प्लान्ड वे इज कि हम कल क्वेश्चंस करेंगे और आज हम टॉपिक्स पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। फाइन, ओके। Just a second, I guess I got a message कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। आवाज़ क्लियर है ना? ओके, डन 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 डन। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पहले हम बात करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है? ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार हम इनको शॉर्ट में पढ़ेंगे सो दैट वी नो कि वी आर ऑन द सेम पेज। पहली चीज़ है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक होती है और बहुत ज़्यादा प्लान्ड होती है, ठीक है।
बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम किसी भी रिसर्च को साइंटिफिक रिसर्च कब कहते हैं, जब वो प्लान्ड हो और जब वो सिस्टमैटिक हो. Scientific research can be classified in several ways. Classification can be made according to the data collection technique based on causality, relationship with time of course, and the medium through which they are applied. अब हम एक बहुत important definition पढ़ेंगे जो है F.N. कलिंगर के द्वारा दी गई है. Scientific research is a systematic, empirical and creative investigation of proportions about to be pre-assumed relationship among the variables. यानी कि किसी भी रिसर्च को साइंटिफिक रिसर्च बोलने से पहले हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि पहली चीज कि वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, प्लान्ड होनी चाहिए. ये सबसे प्राइमरी, दिस इज द मोस्ट प्राइमरी फीचर ऑफ अ रिसर्च that makes it scientific research, which is it should be systematic, it should be pre-planned. Empirical of course should be applied into real life, possibility होनी चाहिए उसकी एक, और एक critical investigation itself means research, है ना. When we say critical investigation of something, it somehow means research of something. So while understanding this, I guess in 2021 we were given this particular statement, and the question was who gave this particular definition of scientific research. So that is why only F.N. Kalinger is there on the notes. Characteristics, we have read about all the characteristics. If you have a problem, you can go to the previous class, and just for the revision purpose I'm going to go through all of these features. Rigorous, purposive, replicability, objectivity, testability, and then being precision, operational definitions and generalizability. And you can read about those in the coming next slides. Now we discuss about, we have already done this particular topic already, so we will be taking a class on YouTube for around, like, I'll take 1 hour on YouTube, and after that we will continue the remaining class on our application itself, जिसके अंदर हम आगे डाटा कलेक्शन और वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सैम्पलिंग एरर्स के बारे में बात करेंगे. तो इन केस यू वांट टू ज्वाइन, तो आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हो थ्रू द कोर्स, और एल्स अभी ये लिमिटेड क्लास 1 घंटे वाली हम यूट्यूब पे करेंगे. प्रोसेस, ये चीज़ें हम पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं, बट जस्ट टू गिव इट अ गुड रिवीजन एंड हम आगे वाले कंटेंट को सेम तरीके से समझें जिस तरीके से समझाया जाएगा. एक थोड़ा सा प्री कैप है एक तरीके से. ओके, द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, देयर हैज़ टू बी अ प्रोसेस, तभी तो हम उसको प्लान्ड बोलेंगे या सिस्टमैटिक बोलेंगे. पहली चीज़ है, आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. आप उस प्रॉब्लम को पता करोगे, पुरानी रिसर्च पढ़ोगे उसी प्रॉब्लम के बारे में, अपना हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे, एक रिसर्च डिज़ाइन जो आपकी रिसर्च को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकता है, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर ओन रिसर्च. उस टाइप का आप डिज़ाइन लोगे, देन यू विल कलेक्ट डाटा, मे बी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. देन देयर विल बी डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी सिस्टमैटिक थिंग. यू कांट जस्ट एनालाइज डाटा बेस्ड ऑन योर ओन assumptions. Interpretation and generalization. Good enough? And then we have this particular phase. Now, one thing that you should note in your mind is there is not one particular process of research or a particular process of scientific research. Keeps on changing. Not exactly changing, but the words keep on changing. Do you understand? The words keep on changing, and due to that the words keep on changing, the questions that you will get in your paper might feel a little different from what is written in the notes. To make you understand this particular thing very clearly, एक प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ की डेफिनेशन बहुत सारे ऑथर्स ने दी होती है. जैसे आपने बचपन अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि
व्हाट इज सिंथेसाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसकी एक डेफिनेशन नहीं है, उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस है, जिसके अंदर से टीचर आपको बेस्ट डेफिनेशन पढ़ा देती है उनके हिसाब से। सिमिलरली जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो नॉर्मली मोटा मोटा जो प्लान होता है, मतलब मोटा मोटा जो प्रोसेस होता है, यानी कि पहले प्रॉब्लम की बात होगी और लास्ट में हम धीरे धीरे एनालाइज पे आएंगे कि डाटा एनालाइज कैसे करना है, एंड देन वी विल रिपोर्ट और देन वी विल गिव द रिसर्च और समथिंग लाइक दैट। तो उसी केस में हमारा फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप और मोटा मोटा प्रोसेस सेम होता है, बट हर बंदे ने एक अलग प्रोसेस दिया हुआ है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नोट्स में जब पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर 8 स्टेप्स हैं, आप गूगल पे जाके देख रहे हो तो वहाँ पे 7 है, फिर आपने गूगल पे दूसरी वेबसाइट पे देखे तो वहाँ 11 है, ठीक है। तो आपको इसीलिए रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, बात को समझने की कोशिश करनी है। जितना समझ के आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा ईजियर, उतना ज़्यादा करेक्टर आंसर आप वहाँ पे जाके टिक करोगे। समझ रहे हो? सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है वही पेपर में एग्जैक्ट उठकर सेम वर्ड्स आ जाएंगे। हाँ, बहुत नोट्स बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड एवरीथिंग से बनाए गए हैं जिसमें वर्ड्स सेम है जो एनटीए यूज़ करता है, जिसके अंदर वर्ड्स का खेल सेम है, जिस तरीके से वो वर्ड्स को यूटिलाइज करता है, वो सारी चीज़ें हमारे नोट्स में आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगी। बट वो चेंज भी तो कर सकता है ना टाइम टू टाइम। हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सब कुछ आता हो और एक आधा क्वेश्चन हो आपको समझ ना आए। वो समझ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एनटीए ने वर्ड चेंज कर दिया और आप लगा के गए थे रट्टा। तो इसीलिए रट्टा नहीं लगाना है, बात को समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है सबसे पहले, उसके बाद आप इवेलुएट करोगे लिटरेचर को, हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे, एक डिजाइन क्रिएट करोगे। ये देखो उसके अंदर बात करी थी सैंपल की, यहाँ पे हम बात करें पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है? पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में क्या डिफरेंस है? जब हम सैंपल ढूंढते हैं, सैंपल साइज की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक होल पॉपुलेशन है किसी भी चीज की, मान लो ये वर्ल्ड है पूरा, आप रिसर्च करना चाहते हो सिर्फ लड़कियों के ऊपर, तो आपका पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल निकलेगा, यानी कि इतना सैंपल आपने निकाल लिया, या फिर ये मान लो ये दिस पार्ट इज गर्ल्स, तो पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन है जिसके अंदर से आपने लड़कियां उठाई, बट सिर्फ लड़कियां आपका सैंपल बन गई है, ठीक है। इनसे आप कलेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, डाटा कलेक्शन, डाटा को एनालाइज करोगे और फिर आप रिपोर्ट राइट करोगे एंड देन यू विल सबमिट योर रिसर्च, ठीक है। गुड इनफ। अब यही सेम चीजें हमने यहाँ पे थोड़ी सी बेटर लैंग्वेज में समझाई हुई है। फर्स्ट इज यू विल रियलाइज अ प्रॉब्लम शुड फाइनली the first step of research is you should know what you are going to research about, है ना। there has to be a process. next is identification of problem. आप कैसे identify कर सकते हो problem को? by asking questions like who, what, when, where, how. okay, then there are things being mentioned over here. Now we will talk about hypothesis formulation. How many of you know what is hypothesis and how many of you don't know what it is? Comment sections. Whole units is population. Samples means selected random units. Presenting the population is you are right, but it's not selected random units. It can be non-random units as well. सैंपल की जब हम बात करते हैं तो अगर हम उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू उठा रहे हैं सैंपल को पॉपुलेशन में से, देन इट इज रैंडम। मगर अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी के तरीके से उठा रहे हैं वो सैंपल, देन at that particular time we can't say it's a random sample या फिर random units. okay, now you understand the point. okay, now we are moving ahead. okay, wait, now we will read about what is hypothesis and how does it work. हमने लास्ट क्लास में, अपने लास्ट यूट्यूब पे भी हमने बताया था what is hypothesis, and I hope आप या तो पुरानी वीडियो देखोगे या फिर आप हाइपोथेसिस को जानते हो। हाइपोथेसिस क्या होता है आपको पता है,
और इसके अंदर भी हमने यही था कि आप एक सॉलिड, यू विल आस्क योर सेल्फ अ सॉलिड क्वेश्चन, what, when, how, when, where, all of these things. You'll do your background research. Make sure that the thing that you take as a hypothesis should be testable, should be empirical, should be practical. Then you will select your independent and dependent variable. Done? Any problem? कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. Moving ahead. Anticipated outcome of the study or tentative statement. That is a question, that is an answer that I got for what is hypothesis, and is a very correct and a very short statement. बहुत good, nice. Someone was asking me to upload these. I guess Anna, you were the one who were you messaged me about notes and everything. So yeah, notes are available on the application. In case you have a problem, let me know. Maybe there is a technical issue due to which you are not able to see, and I'll make sure. Although it's available for everybody, nobody ever messaged me that notes aren't available or something like that. So just check once, refresh your application or update it. Although this problem I haven't heard from anybody at all, but I'll check it for you. Okay. Now we are moving ahead towards research design. This is something very important. Research design. It is a framework of research. Do you understand the meaning of framework? Quite literal. Okay. Now research works are completely based on research design. Okay. It helps to correct evidence is in less time and cost. Research design depends on the objective of the research. What is a research design? Anybody? Okay, I will ask this question once we complete this topic. So let us move to the next one. These are the slides, and give me a second. Types of variable we have already studied. Now let us go to research design over here. A research design is simply a structural framework for various research methods, such as techniques that are utilized by the researcher. Whenever you go or opt for researching something, the first thing is you will realize a problem. You will create a hypothesis, and then you will select your research design or maybe sample, depending on whatever process you are going through while writing a research. Fine. So talking about one thing over here, which is research design. Research design is something that gives a proper structure to your research. For example, we'll take a very random example, not relating to research, so that you understand and then you apply it on research. That example is, if you go to a mehndi wala, the one who applies henna, okay, he knows it very well how to do that, but don't you think that a good design will help him complete the project more beautifully? Now do you understand, like, why is design so important? Because it makes something really beautiful. If you are presenting your research, you should opt for a design that is good enough to represent your problem in the research. There has to be different problems. Like, for example, you are going to research on how to deplete pollution level in Delhi, or you're talking about pollution in Delhi. Do you think quantitative research will help you, quantitative research design, or you will choose on qualitative
research design. Which one will you choose? It depends on the problem itself. If you are going to research, like for pollution, you might choose for qualitative. You might choose for descriptive research. You might choose for analytical research design. But you can't go through, like you can't use surveys. You can, but most of the time if you are defining, but then also it depends on your problem. Like in case you are talking about in numerical terms how much population was there in 2010 and till now, or you're talking about effects. If you're talking about effects of pollution, then you will go for qualitative type of research design. But if you're talking about number, or if you're talking about air index quality, then you would go for quantitative, because you can't talk about numbers in qualitative, na? That is why we say that you need to choose your research design based on what's your problem. You need to choose your research design based on what is your problem. And research design is important because it gives a proper structure to your research. This is an idea that I gave you, an example that I gave you outside our subject. Once you will get inside, you will understand more effectively what I am talking about. ठीक है? Elements of research design, obviously analyze करने का method. Through what method are you going to analyze? For example, there has to be special methods that you can use to analyze your data or analyze your problem, whatever you want to. For example, if you have a formula, there is a formula to, square, rectangle, pi r square and everything like that, because you have formulas for that. There are methods to do that. But in case you do not have a formula, is it possible to find the problem's solution? Maybe someone is asking you the diameter of a circle. It is not possible to find it as quickly as you can find it with a proper method or a proper formula. So that's why it is important to know what. It is really important to know which design you will use, what design has to be, that particular design has to be the one which advantages your research. I hope everybody is understanding. Okay. Now, research design can be thought as the structure if the research, it is glue that holds all the elements in the research project together. A research design outlines the steps and procedure to be followed to address the research question and objectives effectively. The research design determines the type and source of data, the sampling strategy, the data collection methods, and the Okay, somebody has enabled the raise hand in the application. If you have a problem, kindly type in the chat box, or else just lower down your hand. Okay, the next definition that there are 2 to 3 definitions over here which have been given, which I have taken from some websites that were good quality material. Otherwise you will also have easy definitions by Media and More itself. So a research design refers to the strategies and methods researchers employ to carry out their research and reach a valid and reliable result. Okay, it's a method and strategy that a researcher applies. Those methods and those strategies are what? Which particular research design to go for, which particular sampling method to go for, how will we going to collect data, how will you going to analyze data. Okay, all of these things are mentioned in research design. Research design can also be understood as a blueprint. You can also understand it as a blueprint of your research. You will have your problem written, you will have your ways to deal with that problem, you will have your ways to analyze. Everything will be written down in research design.
That's why research design plays a very crucial role. Now, clarity in research objectives. Why do we teachers say that in case you write something, in case you read something now and you write that particular thing in your notebook, like I keep on telling my students that please take your pens and notebooks and keep on making notes with me, है ना, keeps on making notes with me. What will happen then? You will have the clarity while you're writing down something. Exactly, something is here. The clarity of research objective, it happens on this step, because you're going to write everything in a way that whosoever you're, yes, exactly. Someone wrote a very beautiful statement कि मैम रिसर्च डिजाइन लिखने से याद रह जाता है, लिखने से चीज़ें क्लियर हो जाती है. Okay, increased validity and reliability. If you'll have a good research design, the one who will going to check your research, who will be checking it for whatever thing, he will gain a type of validity and reliability, because your research design is written in a way which decreases or minimizes the risk of biasness and helps to control the extraneous variables. Now you know what is extraneous variables. We were talking about that particular thing, I guess, day before yesterday on YouTube and application pe bhi. Anybody having any kind of problem? Better data analysis, obviously it will ensure that the collected data can be analyzed effectively, providing meaningful insights and conclusions. Improved communication, effective use of resources, because it's written, first of all, it's written in a way that it makes easier for other things to be done. Okay, now we will read about some of the research design. One is descriptive research design, where you are solely interested in describing the situation or case under the research study. It is a theory based design जिसके अंदर we mostly give description either from observation or from reading the text we have in the past research history of that particular problem, or else descriptive is something that you write. It's not qualitative, it's not quantitative, it is qualitative type of research. A different, you'll read this later. There is no, there is no point of making this video such a huge one, because all of this is available to you. Whatsoever is the problem, maybe tomorrow or no, tomorrow we'll have a research class on application. We'll complete research over there. Sampling and everything is done, so mostly we'll complete it by tomorrow. Our research unit will be complete on application. Full unit will be done. These notes will be available to you on the application itself. You can download and read these notes. Very beautifully maintained. Disadvantages of descriptive, this also you can learn. Let us come to the survey part. What is survey? The method that includes a detailed description of a subject or topic. The survey is a method by utilizing which you can collect a huge number of facts about the topic or a subject. Whenever you go somewhere, maybe like if you're doing a survey of a particular topic, it obviously gives you different types of information, new information, first hand information. You can conduct a survey through Google Charts, you can conduct a survey through questionnaires, through your telephone, through video calls, or by going to people, different ways. So it is one of the methods of descriptive research is survey. Next one we talk about is observation. There are three types of descriptive, like majorly three types, which is first survey and second is observation. Observation is a technique of observing something or recording something, and then we use that observation, or when we write that particular observation in a way that will help our own research. Okay, so description, that particular description is from observing a factor, observing something. Okay,
Then we talk about case study. What do you mean by case study? Case study is already present information which have been carried from early researchers. Maybe you can also take an example of a particular thing, of a particular story, है ना? For any in-depth knowledge, you will whenever you choose for case study type of descriptive research, it means what? That you are taking an example from a particular thing that was done in past or is present now. So case study are a great way to provide detailed information about an individual such as yourself also. Instead of gathering data across the time or space in order to identify, case study gather extensive detailed data to identify characteristics of a narrowly defined subject. I hope I am very much clear. Do you have any problem in this? Do you think my pace is higher than it should be? Should I go a little slow? Because we have a lot to read today. Am I being too fast for you guys? Should I slow down? I'm asking it for like both the people, for YouTube audience and also for application ones. Should I slow down or the speed is okay? You can understand, right? Okay. Great. I don't understand the meaning of no word. No, ma'am. Someone is saying yes, ma'am. Someone is saying no, ma'am. Now I don't remember the question I asked. The question is, should I slow down? Someone is saying yes, ma'am. Someone is saying no, ma'am. Two people saying the same thing but in a different language. And language stands yes and no. Binary options, if you remember. Okay, let us move on to exploratory research. Exploratory research design uses a researcher's idea and thoughts on a subject to further explore their theories. The study explains unexplored aspects of a subject and details the questions asked is, when you are conducting a research which is exploratory in nature, it is mostly to go beyond the knowledge that is available at the present day. Do you understand? Point. When we are talking about description, it can be the new one, it can give you new information. It can be about case studies, it can be about reading the past things, it can be about like history or something like that. And mostly descriptive researches deals with history, not like 100% of the time. When I say mostly, it's like 40-50%, like a major part of descriptive. But when I talk about exploratory research, we do it when we want more information on the topic which is already present or on a topic which is not present. Like for example, there's a new age problem you want a solution for. So what you are going to opt for? You're not going to opt for descriptive research. You will opt for exploratory research design, in which you will understand and ask for questions. 5W1H. What, when, how, when, where, everything like that. It is inexpensive, interactive, unrestricted and open-ended nature. That means at the end of your research, you will not have a proper particular answer that is the last progress for that particular topic. It is open-ended. That means mostly the problems that are dealt under exploratory research
have a scope of continuing having a new research or new result in future. For example, let us just understand it via an example only. For example, you are going to do a research on how to purify water, best ways of purifying water. So there is no end. It's a open ended. There is no end. You'll have a way to depollute water today, and you will definitely have a better way than you researched about today tomorrow. Like in ancient times, we used things called matkas, we used tamba, we used channis, we used like sedimentation, we used other stuff. But now we have ROs, we have other water purifying systems. But do you think the research ends here? Like the water is now clean. Is it like done? No, tomorrow you'll have better ways to do it. Day after tomorrow you'll find a way of putting more minerals to water. So these kind of researches, they don't stop at a particular point. They are open-ended. That means they are going to gather more information in coming future. They keep on gathering more information. Okay, so now we will hop on to the next one, which is longitudinal research. But if you want to, okay, someone is written, मैम नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है, it is an unstructured type of research. Unstructured क्यों? Why do we call it unstructured result? That I'll explain you with the thing. No pre-research is conducted to support exploratory research. Even there is no prior information available on the problem from the past research. This means it is written that there is no prior information, because now you are not going to rely on the prior information. You are always searching for the new one. Do you understand? You are going to do what? You are going to explain unexplored aspects of the subject which has not been done before. In descriptive research, there is a, where is it? Yeah, in descriptive research you still have a little kind of liberty to talk about past research and get through it. But when you're talking about exploratory research, you need to find new information. You cannot work on old informations. Do you understand? Like why is description different from exploratory research type? I hope it's very much clear. I've made this a very, yes, I might take like, okay, clear. Got the positive affirmations. Let us move to the next one, which is longitudinal research. What is longitudinal research? Let us directly hop on to difference between longitudinal and cross-sectional. We'll read these two research side by side. Okay, so what is, okay, just a second. Okay, just take a break for 1 minute. In case you want, you just take a break for 1 minute and then we will continue. Okay.
Okay, so moving on to the next one, cross-sectional and longitudinal. I hope my voice and everything is clear. Let me know once everything is clear so that I can move on to the next part. Okay, this is PowerPoint, and okay, so we are going to talk about cross-sectional and longitudinal research and cross-sectional research. If you will read this together, you will not have a problem, but in case you read them different ways, like if you read longitudinal first and then cross-sectional, you're definitely gonna get confused. So first we'll read them together and then we'll read them individually. ठीक है? Okay. Very good evening. Rohit, why are you always late in the class? Okay, so now we are starting with longitudinal and cross-sectional. I hope there is no problems. जिसको भी कोई problems है, after completing longitudinal and cross-sectional, I will check for the problems. किसी को कोई भी issues है तो वो लिख सकता है, and then we'll give like 2-3 minutes for your queries in case you have some regarding absolutely anything in research. Absolutely anything in research. Just a second, let me check for my connection. Okay, great. When we talk about cross-sectional research, it is one point in time. Longitudinal is several points in time. पहले इसको read करेंगे, then we will go ahead. Same sample and different samples for cross-sectional. Snapshot of given time changes at a societal level, changes at a individual level. Example has been given, और इन examples को भी आप भूल जाओ. Now I'll give you good examples so that you know while you are in the paper what particular thing is going on. Now we will read this one. Okay. Now I am going to read 3 researches together so that there is just a way to learn things. This is the process of learning these 3 research, and just give me like 5-7 minutes and you will be like 100% sure of what is longitudinal, what is cross-sectional, what is sequential clearly. So now you just need to read by now. Don't apply your minds, don't just go anywhere, just read right now. What is longitudinal right now? Longitudinal is examines changes within individuals over time, provides a developmental analysis. We are not reading disadvantage for at least now. Cross-sectional examine changes between participants of different ages at same point of time. Provide informations on age-related changes. When we talk about sequential, examine changes within individual over time, examines changing between participants of different ages at same point of time. It can be used to examine cohort effects. First thing that you need to remember is that longitudinal is an expensive way of researching. Cross-sectional is a cheaper way. C means cheaper, C means cross-sectional. Clear? This is the only thing that you need to remember by yourself. Other than this, when we talk about longitudinal research, let me give you an example of it. Okay. An example starts with, there is a particular class, like you want to know if students who are above the age of 12 are above age of 12 students are fast learners or below 12 are fast learners. So what would you do in longitudinal is, you will choose one or maybe like 10 students. You will choose 10 students. You will take a survey, a questionnaire,
or maybe through observation, through anything, you will just ask them questions to inquire how much they learned about a particular thing. Okay, so these 10 students are of less than 12 years. So you ask them questions by now. One set is complete. For completing your research, now you need to know that students who are above 12, how are they understanding a particular problem? Are they faster than these people or not? So there is one way of doing that is, you will go to another class at that particular point and you will inquire about the problem to the students who are above 12. This is option number 1, that you go to other class and that particular point you go to, like maybe you go to like 12th class, because students must be 18 by now. You will ask those students some question, or you will observe them and you will get your answer by then only. By the end of the day your result will be done, your research will be done. Okay, now another option is option B. What is option B? That you wait for these people to turn 18, like you wait for 6 years. Now these people who gave you interview for like who are right now less than 12 age, you wait for them to turn more than 12, that is maybe 18, 19, 14 or whatever. So you wait for these people for 6 years and then you take interview from them only. Two different ways. Which one is an expensive way of research and which one is a cheaper way of research? When you are simply walking from one class to another class, when you're completing your research in a single day, that is a cheaper one. C, cheaper. So the one which is a cheaper process, which completes in a single day, is cross-sectional. The one which is expensive and also takes a lot of time, that is, it may take 6 years, 4 years or whatsoever time to complete your research. It is called longitudinal. Clear? Am I clear? Okay, so moving ahead, I will explain this particular topic for once again. Okay, let us understand it over here. Okay, some students are saying ma'am Hindi mein aur bata do. Ye lo. In this particular, we are reading about two research, which is longitudinal and second one is cross-sectional. These are the two that people get most confused in. To finish your confusion, let me tell you, one of them is cheap and one of them is expensive. Okay, now we'll know which one is which one. For example, आपको एक रिसर्च करनी है जिसके अंदर आपको पता करना है कि एक पर्टिकुलर, एक कोई और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ये शैम्पू है, ठीक है. हाउ डज दिस शैम्पू वर्क्स ऑन पीपल विद लॉन्ग हेयर, हाउ डज इट वर्क ऑन पीपल विद शॉर्टर हेयर. तो आपने अपना शॉर्टर वाले, यहाँ पे आपने लड़कियां सिलेक्ट किया जिनके बाल बहुत छोटे हैं, एंड आपने उनको शैम्पू दिया एंड यू गॉट टू नो इट वर्क्स गुड इनफ ऑन शॉर्टर हेयर लेंथ. बट अब आपके पास अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए आपको पूरा डाटा चाहिए. किसका चाहिए? लॉन्ग हेयर वाली लड़कियों का आपको डाटा चाहिए. अब उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं. पहला कि आप वेट करो, जिन लोगों के बाल छोटे थे उनके बाल बड़े हो जाए, मे बी 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर. या दूसरा तरीका है कि आप इनको छोड़ दो और आप लॉन्ग हेयर वाली नई लड़कियां ढूंढो और उनसे डाटा ले लो.
एक आपका जो तरीका है रिसर्च का विच इज कि आपने पहले छोटे बाल वाली ली और आपने सेम डे बड़े बालों वाली लड़कियां ढूंढी और आपने दोनों से पता किया कि हाउ डज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वर्क्स ऑन देम, और आपको एक दिन में आपकी रिसर्च खत्म हो गई, वन डे में. And second way is you are waiting for the shorter length haired girl to grow their hair for like 6 months or 1 year. तो आपने इतना किया. तो which one will be a cheaper process? One day वाला will be a cheaper process. C, cheaper. This is cross sectional. And now we will read about this particular thing in a way कि आपको समझ आए कि ये हो क्या रहा है. हम यहाँ पर आते हैं वापस से. नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस वन बाय जस्ट रीडिंग इट. ओके, वन पॉइंट इन टाइम, that means you will complete your whole research in time in one point, like you will take 1 point in time. But abhi when we are talking about longitudinal research, what are we doing? We are taking several times, like one person and different intervals ज़्यादा है, different intervals. But over here when we are talking about cross sectional, it is multiple people and intervals in one interval at one time. So there are different samples, maybe like different people. This is same people in several points in time, but it's a different samples at one particular point. जिसका मतलब है कि आप क्रॉस सेक्शनल में क्या करते हो, बहुत सारे सैंपल्स लेते हो एक ही टाइम पे, बट आप लॉन्गिट्यूडनल में एक सैंपल लेते हो बहुत सारे टाइम पे. ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, विच इज क्या, जब आप लॉन्गिट्यूडनल की बात करोगे, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन इज अ डिजाइन इन विच यू टॉक अबाउट सेम पर्सन इन डिफरेंट टाइम स्पैन्स. Like first you'll take, if you want to know that if a girl or a boy, which one is more mature, generally it is said a boy is more mature and a girl is more kiddish and stuff like that. But uske liye you want to conduct a research, so what would you do in cross sectional? You will opt for 2 samples, which is girls and boys. Okay, you will be waiting for these girls to grow up and know if they are mature by like the end age, like at a mature age. And in longitudinal what you will do, you will be taking two only, but you will wait for these particular people only. Like if you are talking to Ria, you will be talking to Ria at age 10, 20, 30, 40, 50. And if you take a boy called Ram, then also you will take the, like you will talk to Ram in different time spans, when he is 10, when he is 20, when he is 30, when he is 40. But when you are into cross sectional, what you will do, you will go on like one particular day, one day, maybe like today is like what's the 28th of October, so you go on 28th of October to Ram who is 10 years, to maybe like Krishna who is 20 years, then you go to Sanjay who is 30 years, then you go to some other person who is 40 years, and you have done your whole research in one day. So when you do your whole research in one day or a shorter period of time, then it is cross sectional. One day is cheaper means C means cross sectional. This is like everybody knows what is the difference between longitudinal and cross sectional, but they do not know the way how to remember which one was longitudinal and which was cross sectional. So this is a way of reminding yourself how to learn. Okay, moving ahead. Are you like clear? सब मुझे सबके सब ऐसे सोते सोते रिएक्शंस मत देना. अभी फटाफट से लिखेंगे सब कि लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल समझ आया या नहीं आया, और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन. आया, ग्रेट. जल्दी जल्दी आंसर्स चाहिए.
Like on YouTube, Anna and Pashuram, are you guys like be active enough to be in the class so that सिर्फ एक बार देखने में बात समझ आ जाए, वापस 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 देखना, अपना भी टाइम वेस्ट करना होगा और साथ में वो दैट डजंट लाइक इट्स नॉट अ गुड वे ऑफ स्टडिंग. तो जिसको समझ आ रहा है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर थिंग एप्लीकेशन पे ऑल्सो आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. ओके नाउ वी आर मूविंग अहेड. आई होप ये क्लियर हो गया है सबको. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के लिए वी हैव अ प्रॉपर क्लास. वी हैव ऑलरेडी डन इट. वी हैव डन इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑन एप्लीकेशन एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब. दोनों जगह हमने बहुत 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 अच्छे से ये पढ़ा है हमने. तो आई होप कि ये मुझे दोबारा समझाने की अभी ज़रूरत नहीं है. ऑल्दो इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप डाल दो. आई विल मेक अ वीडियो, आई विल पोस्ट इट, मे बी आई विल कम लाइव और वट एवर वे आई विल डील विद दिस टॉपिक इन अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से नेक्स्ट. Now this is something that we will do in a only application format. अभी हम करेंगे उसको YouTube के लिए. Let's do one more topic on YouTube. Just hold on. I guess sampling is also done on YouTube. So it's almost 1 hour. So we will complete our class over here. And after that, we will do a class. We'll continue this particular class. After in application, we will be doing demand characteristics. We will be doing sampling for once again. YouTube पे नहीं होगी, मतलब होगी कल होगी, फिलहाल के लिए नहीं होगी. इन केस यू हैव अ लाइक एनी क्वेरी तो आप मुझे बताओ. आई एम हेयर फॉर लाइक 1 hour इफ यू हैव गुड क्वेरीज. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है. यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे करेंगे. यूट्यूब पे एक्चुअली ना इससे बड़ी क्लास थोड़ी सी टाइम देती है अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा. एंड रोहित, यू आर आस्किंग अबाउट टाइम. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. मैं लाइव आने से पहले हमेशा वहाँ पर नोटिफाई करके तब लाइव आती हूँ, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो. ठीक है. ओके, स्टूडेंट्स हु आर ऑन एप्लीकेशन, आप यहीं पर रहना. एंड टू माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय. कोई भी क्वेरीज आप मुझे लिख सकते हो. कल हम वापस से कनेक्ट करेंगे. और अगर आप लोगों का ऐसा है ना कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है आज, तो आप मेरे को अभी डाल सकते हो सो दैट वी कैन रीड इट टुमारो. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. सारे लिंक है डिस्क्रिप्शन में. 2 मिनट के लिए ना डिस्क्रिप्शन को भी शांति से पढ़ोगे तो एप्लीकेशन का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का हर एक चीज डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, तो आपको मिल जाएगी. एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करते हैं. ओके, सो दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जितने लोग यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं ना, आप लोगों के लिए होता है थोड़ा सा लिमिटेड कंटेंट. ठीक है, वो मैं मानती हूँ. बट उसको रेक्टिफाई करने के लिए या आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट्स देने के लिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप जो भी टॉपिक लिखोगे, देखो एप्लीकेशन पे तो हम सारे के सारे टॉपिक्स कर ही रहे हैं. ठीक है, एप्लीकेशन पे तो हम बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ यूनिट बाय यूनिट, एक एक टॉपिक लेके उसके PYQ यूज़ करके डाउट क्लियरिंग सब कुछ करते हैं. लीव इट असाइड. जिन लोगों को फ्री क्लासेस लेनी है उनके लिए भी अगर आपको किसी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे आके मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो,
इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो कि मैम आज ये इस वाली चीज़ की क्लास ले लो, या फिर मैम ये वाली चीज़ समझा दो, वो वाली चीज़ समझा लो। तो जो भी चीज़ें होंगी हम वहाँ पे क्लास लेंगे। जितनी भी क्वेरीज होगी क्वेरीज लिख के दो, विल टेक अ क्लास। अभी भी अगर आपके पास क्वेरीज है अभी भी, तो आई कैन जस्ट टेक द क्लास। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, क्वेरीज कंप्लीट करके ही घर जाएंगे। अगर है तो आप डाल सकते हो, नहीं है कल क्वेरीज आएंगी तो आप कल वाली क्वेरीज टेलीग्राम या कहीं और डाल सकते हो, हम वहां पे आई आंसर। फ्रॉम पेपर 1, फ्रॉम पेपर 2, फ्रॉम एब्सोल्युटली एनीथिंग। लाइव हो पाया तो लाइव लेंगे, लाइव नहीं हो पाया तो कोशिश करेंगे कि हम इसको एज अ वीडियो पोस्ट कर दे। कल हमने कम्युनिकेशन की एक बहुत अच्छी वीडियो पोस्ट की है जो 3 पार्ट्स में है, उसका मैंने एक पार्ट पोस्ट किया है। अब आप वो एक पार्ट देखो, उस पर कमेंट वमेंट करो तो मुझे मोटिवेशन आएगी कि मैं दूसरा पार्ट भी डाल दूँ। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर बाय नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं। संडे को क्या हर रोज क्लास होती है? रोज जिस दिन कल हम बाय चांस क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे यूट्यूब पर, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं जा पा रही थी। तो वो भी मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था कि आज क्लास नहीं होगी, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक क्लास मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। एक क्लास मैंने कल रिकॉर्ड करके डाली थी, रादर देन रिकॉर्ड और एडिट किया था फटाफट से सब कुछ, और तब वो मैंने वो डाली थी। लाइव हम नहीं आए थे कल। संडे को भी क्लास होगी, रोज होगी क्लास। किसी को और कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू है तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। अभी ना बहुत जल्दी ना हम सिर्फ एप्लीकेशन पे क्लास लेंगे और उसको मैं अवेलेबल टू ऑल कर दूंगी, तो आप एप्लीकेशन पे भी क्लास ले पाओगे। कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन वाली ले ले, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वो अभी जैसे हम ये ले रहे हैं रिसर्च, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अच्छी है। सेम वे कम्युनिकेशन भी लेंगे क्योंकि पेपर 1 वाले बच्चे कम्युनिकेशन पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको फिनिश करते हैं। यस, सो हम यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं एंड वी विल बी बैक विद अ वेरी गुड वीडियो। मैं भी देख सकता हूँ ऐप पर रिकॉर्डिंग क्लासेस। हाँ जी, कुछ क्लासेस अवेलेबल फॉर ऑल हैं, वो आप क्लासेस देख सकते हो। जैसे कि ये वाली क्लास हमारी एप्लीकेशन पे भी, अभी एप्लीकेशन पे भी लाइव है और ये यूट्यूब पे भी लाइव है, दोनों जगह में साथ में लाइव हो। एप्लीकेशन पे भी हम कंटिन्यू करेंगे रिसर्च को, यूट्यूब पे हम खत्म कर रहे हैं। अभी जो मैं इतना बोल रही हूँ इस टाइम पे एप्लीकेशन वाले बच्चे पानी वानी पीने गए हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि आज ये क्लास बहुत लंबे जाने वाली है। हाँ जी, हम रिसर्च ख़त्म कर देंगे आज नहीं तो कल कर देंगे। कल तो पक्का ख़त्म हो ही जाएगी। फिर हमारे पास बचेगा 29 ख़त्म हो जाएगी, 30th बचेगा हमारे पास फॉर डाउट क्लियरिंग सेशन, क्योंकि 31st को PhD CUET पेपर है। ओके, वेलकम। सो हम ख़त्म करते हैं अभी यूट्यूब पे। सी यू ऑल बाद में। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आके बता दो, इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर। ओके, थैंक यू यूट्यूब, बाय बाय, टेक केयर।